अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दानियाल शकूर और आज हम बात करेंगे मैप्स की। मैप्स मेरे ख्याल में इसमें आप अगर ये मेरी वीडियो में साथ साथ प्रैक्टिस करें तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 80-90% जो है वो आंसर्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ मेरे साथ चलेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट 100% रिज़ल्ट। तो मेरी अप्रोच ये है कि मैं हमेशा इजी मैप से स्टार्ट करता हूँ। तो आज भी मैंने एक इजी मैप ही से स्टार्ट लेना है। तो वन बाय वन सबसे पहले इजीएस्ट मैप, फिर उससे जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी, और इसी तरह करते करते हम लास्ट तक एक फाइनल यानी कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट मैप है इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस और इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी, वो हम करेंगे। और ये सारे मैप्स हैं आइल्स की बुक्स में से ही हैं। ये ऑथेंटिक हैं, किसी के खुद के बनाए हुए नहीं है, ये आइल्स के ही मैप्स हैं। तो आप जो अपना स्कोर आइल्स की जो मेयार है उसके मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। ओके, तो दिस इज़ बुक 15 एंड टेस्ट 2, और ये उसमें क्वेश्चन नंबर 15 to 20। इट मीन्स के ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पार्ट 2 में है मैप। तो मैप्स में क्या करना है, देखें आपके पास एक तो मैप होगा, दिस वन। आई होप यू गाइज कैन सी माई कर्सर, इसी को आपने फॉलो करना है तो आंसर्स आपको फाइंड हो जाएंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो क्वेश्चंस रीड करते हैं। देखें क्वेश्चन तो वो इसमें रिकॉर्डिंग में बताएंगे कि जी क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, बट जहाँ से हमने आंसर फाइंड करना है दैट्स द मैप। तो इट मीन्स के आपको मैप स्टडी करना है। इस मैप में देखते हैं क्या क्या हमारे पास हाईलाइट्स हैं। वी हैव 3 गेट्स, west, south and east gate, then a river in the north, and finally lily pond, that's it. अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो भी मैं साथ साथ आपको पहले क्लियर कर सकूँ। सबसे कॉमन चीज़ जो है, आपके पास डायरेक्शन दी हुई है या नहीं दी हुई। सिर्फ आइल्स के मैप नहीं, बल्कि दुनिया का कोई भी नक्शा हो, जो टॉप होगा वो आपका हमेशा नॉर्थ होगा। जो रिवर है दिस इज टॉप, तो ये नॉर्थ। तो इसी तरह बॉटम आपका साउथ है, राइट इज़ ईस्ट एंड लेफ्ट इज़ वेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एरिया है, हेयर दिस इज़ ऑप्शन सी, तो ये क्या है, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, या इसको टॉप राइट कहते हैं। सिमिलरली इसके ऑपोजिट ऑप्शन ए है, तो नॉर्थ वेस्ट या फिर टॉप लेफ्ट। इसी तरह साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट, ये चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि वो कभी भी ये ऐसे नहीं कहेंगे कि जी ये जिस तरह ये ऑप्शन जो ई है इसके जो नॉर्थ ईस्ट में ऑप्शन है वो आंसर है, नो। वो हमेशा आपको, जैसे लिली पॉन्ड है, लिली पॉन्ड का मैं भी कह देंगे जी वेस्ट है, लिली पॉन्ड के साउथ में, या साउथ गेट के जैसे आप ऊपर जाएंगे लिली पॉन्ड की तरफ तो आपके जो रास्ते में पड़ेगा, तो इस तरह से इस ऑन द दैट रोड, या इस तरह से। ओके, एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, द पाथ दैट लीड्स ऑफ फ्रॉम। ये जिस तरह ये पाथ है और ये जो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है, दैट पाथ लीड्स ऑफ फ्रॉम दिस पाथ। दो ये भी मेन पाथ है, बट समटाइम्स दे हैव वेरी स्मॉल पाथ। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें ये कि या तो वो आपकी डायरेक्शंस बता सकते हैं, या फिर आपको जो है वो इस तरह से अ पाथ दैट लीड्स ऑफ फ्रॉम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other 3 wards. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are 2 areas that are particularly intended for children. The playground
and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the West Gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right angle bend in the path. Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the West Gate. Now, as you're all gardeners, I'm sure you'll like to hear about the plants that have been chosen for the park. That is the end of part 2.